students, hi parents, how are you all? I hope you all are good. Good afternoon children. Say good afternoon teacher. Yes, good afternoon. So children, go and review your book. Which book? Edumax level B, book number 4. Okay? Go and review it fast. Remove? Very good. So see on the blackboard, I am going to write today's date. आज का डेट क्या है? देखो blackboard पे. Today's date is 17th December 2020. Okay? And what we are going to learn? We are going to learn story. हम क्या पढ़ने वाले हैं? Story. Page number 5 to 52. Okay? Understood? Okay, good. So children, open your book. Show me your book. Book दिखाइए आप अपना. Yes. Good. So, our story name is The Merchant Reward. See on the blackboard, I am going to write. Our story name is The Merchant Reward. Okay? This is our story name. Okay? तो हमने कहाँ तक रीड कर लिया था, कहाँ तक हमारा फिनिश हो गया है, वहां तक पहले हम देखते हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड दिस स्टोरी. पहले टीचर आपके लिए रीड करेंगे कि कहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ है लास्ट लेक्चर में. देन आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड. फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. सो सी इन योर बुक. लिसन केयरफुली. फोल्ड योर हैंड्स. हाथ ऐसे फोल्ड करके बैठो और टीचर क्या बोल रहे हैं अच्छे से सुनो. Our story name is The Merchant's Rewards. Rewards. Once there lived two friends called Ram and Shyam. They were very good friends and did everything together. One day they came to the city to earn money. They had heard about a very wealthy merchant and went to him looking for a job. The merchant gave each of them a cane basket. Then he pointed towards a well in his garden, saying, "Take this basket and draw water from the well till sunset. That is your job." This much we have completed. Yes or no? इतना हमने कंप्लीट कर चुके हैं. अब उसकी आगे. At that movement, Ram thought an idea. Ram thought the idea to draw water in a cane basket was foolish. So he went to sleep. इसका मतलब ये है चिल्ड्रन कि उसी टाइम पे जब मर्चेंट ने उनको जॉब दिया था तो मर्चेंट ने उनको बोला. उस टाइम पे राम को एक आइडिया आया. वो सोचने में पड़ गए राम कि ये जो पानी वेल में से जो निकालेगा ये तो बेवकूफी है कि बास्केट को वेल के अंदर डालना है फिर पानी निकालना है. ये तो बेवकूफ लोग काम करते हैं, मैं ये नहीं करूंगा. और वो क्या करते, जाकर सो जाते हैं. कौन सो जाता है? राम सो जाता है. ठीक है. Then on the other hand, Shyam took the basket and started walking. It means कि एक जगह जहाँ राम को लगता है ये सब तो काम हमारा है ही नहीं, ये सब हमें काम करना नहीं चाहिए, और वो जाके सो जाते हैं. और दूसरी जगह पर जो श्याम रहते हैं वो क्या करते हैं, वो बास्केट उठाते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं.
आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इसका मीनिंग। जो टीचर ने अभी बताया वो इनका मीनिंग है ये कि एट दैट मोमेंट राम थॉट द आइडिया टू ड्रॉ वाटर इन अ केन बास्केट वॉज फुलिश। राम सोचते हैं कि ये जो केन बास्केट डालकर पानी निकालेगा ये तो सब पुलिस लोग का काम है, ठीक है। सो ही वेंट टू स्लीप, तो वो जाकर सो जाते हैं। और दूसरी जगह पर ऑन द अदर हैंड श्याम टुक द बास्केट एंड स्टार्टेड वॉकिंग। और दूसरी जगह पे जो श्याम रहते हैं वो क्या करते, बास्केट को लेकर और वो काम करना स्टार्ट कर देते। वो जाते वेल के अंदर क्या करते, बास्केट डाल के अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, और टीचर वीडियो के बाद जब वीडियो खत्म हो जाता है तो एक छोटा सा वीडियो भेजते हैं जिसमें द मर्चेंट रिवर स्टोरी है, वो भी देख के आप लर्न कर सकते हो। वो हमारे बुक का ही स्टोरी है, राइट। तो आपको वो स्टोरी को देख के लर्न करना है। जिनके पास बुक नहीं है प्लीज वो स्टोरी फुल देखिए। जितना टीचर ने सिखा उतना ही टीचर भेजते हैं, तो अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो सी आई एम गोइंग टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, आप लोग देख लीजिए। एट दैट मोमेंट राम thought the idea to draw water in a can basket was foolish. So he went to sleep. Fine children, ये first line है। At that moment, Ram thought the idea to draw water in a cane basket was foolish. So he went to sleep. Now next line. Next line what it is? On the other hand, अब वहीं दूसरी जगह पर on the other hand, Sham took the basket on the other hand, Sham took the basket and started walking. Understand? I hope you all understood कि आज हमने this much line we are going to learn today, ठीक है। तो see on the blackboard, blackboard पे देखिए आप सब। Our story name is The Merchant Rewards. Our story name is The Merchant Rewards. At that moment, बोलो, at that moment, Ram thought the idea. Ram thought the idea. बोलो, Ram thought the idea to draw water in a cane. To draw water in a cane basket was foolish. To draw water in a cane basket was foolish. So he went to sleep. So bolo. So he went to sleep. Understood? On the other hand, Sham took the basket. On the other hand, bolo children. On the other hand, Sham took a basket and
started working and started working. ठीक है, एक जो राम थे वो काम नहीं करना चाहते थे, वो जाके सो गए, और दूसरी जगह जो श्याम थे वो अपना काम करना चालू कर दिए. राइट? तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच. तो वापस से रीडिंग करेंगे हम. बोलो. द मर्चेंट रिवॉर्ड. आवर स्टोरी नेम इज द मर्चेंट रिवॉर्ड. Once there lived two friends called Ram and Shyam. Once there lived two friends called Ram and Shyam. They were very good friends. They were very good friends and did everything together. And did everything together. One day they came to the city. One day, बोल रहे हो ना चिल्ड्रन आप लोग टीचर के साथ रिपीट करो. ठीक है, टीचर बोलेंगे, टीचर के पीछे रिपीट कीजिए. One day they came to the city to earn money. They had heard about a very wealthy merchant. They had heard about a very wealthy merchant and went to him looking for a job. The merchant gave each of them, bolo, the merchant gave each of them a cane basket. Then he pointed towards the well. In his garden saying, take this basket and draw water from the well. Take this basket and draw water from the well till sunset. That is your job. At that moment, bolo children, at that moment, Ram thought the idea. At that moment, Ram thought the idea to draw water in a cane basket was foolish. At that moment, bolo children, at that moment, Ram thought the idea to draw water in a cane was foolish. So he went to sleep. On the other hand, Shyam took the basket. On the other hand, bolo children, on the other hand, Shyam took the basket and started working. Understood? समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड. तो चिल्ड्रन वापस से हम रीड करेंगे. अगेन वी आर गोइंग टू रीड दिस. द मर्चेंट rewards. Once there lived two friends called Ram and Shyam.
They were very good friends and did everything together. Bolo children. They were very good friends and did everything together. One day, they came to the city to earn money. Bolo, one day, they came to the city to earn money. They had heard about a very wealthy merchant. They had heard about a very wealthy merchant and went to him looking for a job. The merchant gave each of them a cane basket. Bolo, the merchant gave each of them a cane basket. Then he pointed towards the well. In his garden saying, take this basket and draw water from the well. Till sunset. That is your job. Okay? At that moment, Ram thought the idea to draw water in a cane basket was foolish. So he went to sleep. On the other hand, Sham took the basket and started walking. Okay? Have you all understood? Fine. This much you have to learn. लर्न करना है, बाहर करना है, जैसे टीचर बोल रहे हैं उनके पीछे रिपीट करना है. फाइन चिल्ड्रन, बुक में देख कर रीड करो, स्पेलिंग से रीड करो, जैसे आपको रीड करना है वैसे करो, लेकिन रीड करो. आपको ओरल में टीचर पूछेंगी तो आपको आना चाहिए, राइट? तो आपको पूरा जितना भी टीचर ने स्टोरी सिखाया वो आपको लर्न करना है. और आपका होमवर्क ये है, स्टोरी का होमवर्क ये है कि जितना भी टीचर ने आज लेक्चर में सिखाया है उतना आपको क्या करना है, लर्न करना है. ठीक है? अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन, मतलब ना अच्छे से जो आप बोलते हो ना वो समझ में आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो. फाइन चिल्ड्रन, तो आज के लिए इतना काफी है. दिस ऑल फॉर टुडे. बाय बाय, थैंक यू. हेलो चिल्ड्रन, इसके बाद आपको एक लिंक आएगा जिसमें आपको क्लिक करना है, वंदे मातरम सॉन्ग सिंग करना है. Thank you. The Merchant's Reward. Once there lived two friends called Ram and Shyam. They were very good friends and did everything together. One day, they came to the city to earn money. They had heard about a very wealthy merchant and went to him looking for a job. The merchant gave each of them a cane basket. Then he pointed towards a well in his garden, saying, "Take these baskets and draw water from the well till the sunset. That is your job." At that moment, Ram thought the idea to draw water in a cane basket was foolish. So he went to sleep. On the other hand, Shyam took the basket and started working.